Good morning, everyone. Today we are going to start with our second chapter, which is known as the alteration of share capital 2. As we discussed earlier in chapter number 1, which is alteration of share capital 1. Share capital 1 is related with the splitting of shares. वो किससे relate कर रहा है? It is related with the splitting of shares. Means subdivision of share capital, consolidation of share capital, changes in authorized capital, same way conversion of equity share capital into equity stock. So different transactions were there related with the alteration of share capital 1. The extension of this chapter, which is known as the alteration of share capital 2. This chapter is basically related with issue of bonus shares. This chapter is related with the issue of bonus shares. Before starting this topic, first we need to understand the actual concept of bonus shares. Bonus share actually है क्या? Because we know that we have two types of share capital. Equity share capital and second one is a preference share capital. Equity and preference already we learned in 12th standard. Already we discussed in alteration of share capital 1, and now we are going to start with the issue of bonus shares. Before starting the practical part of this chapter, first we discuss related with bonus shares. What exactly the bonus share is, that we are going to learn first. Look here, bonus shares, the meaning of bonus share is in this way. It is very important content, bonus share, because sometimes they ask you bonus share in theoretical part. कभी-कभार theory में पूछते हैं भाई explain the term bonus share. तो आपको bonus share का basic fundamentals clear होना जरूरी है. तो bonus share is what? I am just putting all these notes here. You just give your focus on this side. The shares which are issued by company to its existing shareholders out of free reserves. Here two important words are there. First one, existing shareholders, and the second one is a free reserves. What do you mean by that existing shareholders? Existing shareholders का मतलब क्या? कि भाई अभी जो मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग है, जिनके पास मेरी कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी हैं, they are holding shares of my company, they are known as the existing shareholders of the company. So very first thing related with the issue of bonus share is that existing shareholders, that company issued these shares at out of free reserves. Free reserves का मतलब क्या होगा? What do you mean by that free reserves? Have you heard this word? Free reserves means accumulated profit. Have you heard this word? Accumulated profit. Accumulated profit means कि भाई कंपनी पिछले 5 या 10 साल से बिजनेस कर रही है. Company every year, company is earning profit. Out of that profit, company can assign certain amount as a reserves. Because why company is creating reserves? Company is creating reserves for the future contingencies.
फ्यूचर में अगर कोई भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो इन दिस सिचुएशन कंपनी क्या करेगा कि भाई उसके पास जो फ्री रिजर्व्स है उस रिजर्व्स का यूज करके कंपनी अपने शेयर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। तो हियर द थिंग इज वेरी सिंपल दैट बोनस शेयर इश्यू करना है तो कंपनी को पहले दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग दैट इट मस्ट बी इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और दूसरी बात इट मस्ट बी आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स। नाउ द थिंग इज दैट एग्जांपल्स ऑफ फ्री रिजर्व्स, first one, have you heard this general reserve? Yes or no? Yes. Okay. Number 2, have you heard this profit and loss account? But this is, we are talking about the credit balance only. हम कौन सा बैलेंस की बात कर रहे हैं? We are talking about the credit balance of profit and loss account. Same way, securities premium, when we issue share capital with a higher amount, we consider the higher amount as a premium. This premium is also known as a free reserves. एक बहुत important reserve है, this is called as capital redemption reserves. We called it in short, it is known as the CRR, Capital Redemption Reserve. Capital Redemption Reserve, this reserve generated at the time of redemption of preference shares. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है that is related with the alteration of share capital 3. Alteration of share capital 3 is purely related with the redemption of preference shares. When you redeem the preference shares, whatever reserves created, whatever the reserve generated, that reserve will be known as a capital redemption. Short, we call it as a CRR, capital redemption. So these are the different free reserves available with the company, and company can issue bonus shares only out of that free reserves. उसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास अगर मान के चलो रिजर्व्स नहीं है, suppose that if I started my company this year 2019, मैंने अभी इसी साल में कंपनी शुरू किया, तो एक सीधी बात है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में शायद रिजर्व्स नहीं होंगे. If I am not having reserve, तो Companies Act 2013 will not allow me to issue bonus shares. तो हमें ये होगा कि सर रिजर्व्स नहीं है तो बोनस शेयर को क्या कनेक्शन है? बिकॉज एक पॉइंट जो अभी मैंने नहीं लिखा दैट आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है. बोनस शेयर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ये कैसा है बोनस शेयर? फ्री ऑफ कॉस्ट है. फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त में मिल रहा है आपको. कैसे मिल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट. तो व्हेन कंपनी इज गोइंग टू इश्यू बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट बोनस शेयर कंपनी इश्यू ओनली एंड ओनली आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स बिकॉज बोनस शेयर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. इट मींस दैट कंपनी इज नॉट कलेक्टिंग एनी सिंगल रूपी. कंपनी इज नॉट कलेक्टिंग एनी सिंगल रूपी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डर से एक भी पैसा कलेक्ट करने वाली नहीं है, बिकॉज कंपनी क्या करेगी? बोनस शेयर इश्यू करेगी, पर पैसा कहां से लाएगी? आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स. मतलब फ्री रिजर्व्स है तो हम बोनस शेयर जो इश्यू करेंगे वो कैसे होंगे? इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एक भी पैसा हमें शेयर होल्डर से लेना नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर. बोनस शेयर में एक और चीज जानने वाली है, दैट इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. अब मान के चलो कि आप सब मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, बट यू ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट बोनस शेयर ऑफ माय कंपनी. नहीं इसके शेयर तो लेनी नहीं है, वो अच्छे नहीं है ना, कंपनी अच्छी नहीं काम कर रही है, हम क्यों बोनस शेयर ले इस कंपनी के, ऑल्दो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट.
तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा, द शेयर्स व्हिच आर इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जो मेरे अभी जो शेयर होल्डर्स हैं मुझे ये बोनस शेयर सबसे पहले किसको देने, आई हैव टू गिव टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पर अगर मान के चलो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब आप सब ऐसा बोल रहे हो कि हमें बोनस शेयर नहीं चाहिए, तो can I issue these shares to another shareholders or another person? तो बोनस शेयर ने बहुत क्लियरली बोला है, प्रोविजन में लिखा हुआ है कि भाई if existing shareholders are refused to accept it, if existing shareholders are refused to accept it, कि भाई अभी के जो शेयर होल्डर्स ना वो अगर बोल रहे हैं कि हमें ये बोनस शेयर नहीं चाहिए, in that situation companies are not allowed to issue these shares to any outsiders, तो कंपनी किसी और को नहीं दे सकती। जैसे कि आप सब मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, मैंने डिक्लेयर कर दिया एनुअल जनरल मीटिंग में वी आर गोइंग टू इश्यू बोनस शेयर्स, राइट, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे रिजर्व से इश्यू होगा, सब कुछ ओके गुड एक्सेप्टेड। पर आप में से कोई ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि हमें आपकी कंपनी के एक भी बोनस शेयर नहीं चाहिए, और सपोज दैट पर्सन इज नॉट एग्जिस्ट और न तो कोई नॉमिनी है, तो इन दिस सिचुएशन दिस शेयर्स कंपनी कैन नॉट अलॉट टू एनी अदर पर्सन, दूसरे किसी को कंपनी ये शेयर्स नहीं दे सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली इट इज? तो बोनस शेयर्स जो है ना, बोनस शेयर इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ हमें सबसे पहले किसको देने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैं यहाँ पे इसका एक्सटेंशन लिख रहा हूं, if existing shareholders refuse to accept it, then company cannot allot shares to any other person. Are you clear with this, everyone? Okay, so now we take a brief revision about the bonus shares. Again, what do you mean by that bonus share? Everyone repeat with me. Bonus share means the shares which are issued by company to, इसको इश्यू कर रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया कि जिनके पास आज की तारीख में मेंबर रजिस्टर में नाम है, उसे हम क्या बोलेंगे, दे आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आउट ऑफ कैसे इश्यू करेंगे, फ्री रिजर्व्स। These are the free reserves which company is having, and company shows all that free reserves in the balance sheet. Out of free reserves which are कैसे हैं ये shares, free of cost. These all shares are free of cost. And one important thing, if existing shareholders refuse to accept it, कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये बोले कि हमें आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए, तो कंपनी कैन नॉट अलॉट दिस शेयर्स टू एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को कंपनी ये शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। आर यू क्लियर विद दिस? This is called as a bonus shares. So these are the important points related with the bonus shares, and on the basis of that we will learn a practical part, and we need to pass a journal entry related with the issue of bonus shares, right? So everyone please note down all these things related with the definition part of the bonus shares.